Welcome back guys again in my Android software tutorials. First of all, I wanna say sorry. I am so sorry for I am really sorry for being careless little bit for teaching you Android apps development because I didn't create still my demonstration videos and demonstration apps. I am sorry for that. It's all happening because the lack of time. I am busy with my other things, other stuff. Like I am learning any another things and another languages, and so I was not giving the time for this channel and for these projects and videos. I am sorry for that. And the many people are commenting on my videos like if you cannot share your source code or other things too, then don't make videos. And others many things they are commenting on my videos like don't publicity yourself, many things they said in my videos. I want to say I will say um, I will say that I am not publishing, I am not doing any kind of publishing for myself. It is I am uploading my all videos and all projects. It is because all of you. Actually, I am passionate about this for teaching you the Android apps development, because I know that how it is hard to learn yourself for developing the Android apps and other things too. So I just want to help you for learning the Android apps development and many other things too. So I am not doing any kind of publicity myself. So let's come on the topic now. Guys, so in today's video and in today's project, I am first of all I will create the project for the Android automatic call recorder app. Okay guys, now let me use little bit Hindi language. Okay guys, so hello everyone, and let's start now. I'm not I have already speech all everything in English, so I'm not going to repeat this स्पीच इन टू हिंदी लैंग्वेज. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मतलब अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जितने प्रोजेक्ट्स मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाए हैं, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब आपको सिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, इससे पहले कि आप मेरे चैनल के वीडियोस पे कमेंट करें कि मतलब मैं पूरे सोर्स कोड नहीं शो कर रहा हूँ या अदर्स मैनी थिंग्स. सो नाउ यू विल नॉट से sorry for that, and let's start now. So first of all, open your Android Studio. Okay guys, now my Android Studio is opening. My IDE is going to be open. Okay guys, so my Android Studio has opened, and now so start a new Android Studio project. Click on this. And give the application name. Like we are going to develop the call recorder app, so let's give the name for this application. Automatic call recorder. Okay guys, select your default project location. I mean whatever you want to select. Let me change your name. Okay guys, click on next and select your API platform, whatever you like, whatever you want. I will select API 17 because my emulator does not support the Lollipop and KitKat, so I will select the Jelly Bean and click on next and select the empty activity and click on next and click on finish. Okay guys,
Okay guys, so now our project is ready for code. So let me tell you first, and I already, guys, मैंने कहा था ना कि मैं हिंदी और इंग्लिश both language I am going to use. Okay guys, so okay guys, so first of all I have to let me tell you what is this. I know what I know about this activity main.xml file and the main activity.java file. Okay guys, so first of all we will design our UI for call recorder app. So first of all delete this hello world. Now it is removed. Okay guys, so first of all what we need to do, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसे डिज़ाइन करने वाला हूँ. सो इसे डिज़ाइन करने के लिए पहले मुझे गाइस, सो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे जो ये आप टाइटल बार देख रहे हैं ना, इसे मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ. पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ए हेडिंग है. Now I am going to make some changes in this. गाइस मैंने इसे रीनेम कर लिया है ऑटो कॉल रिकॉर्डर में, और इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीनेम दिस एंड I am going to make this text some bold. So for making this bold, are you Android text style RTB. Okay, so now it is bold. You are looking here, and then I will make this bigger little bit, and right for making this large, I will use Android text appearing attributes. It is become large. Guys, now let me make this fit little bit. Okay guys, and I think now it is fine. We can make it more large, but I think it is enough. And then I am going to change this background color. This is white. I will change this into blue. First of all, remove this padding and margins. Make this a little bit down. Okay guys, and now change the background. I will rename this into blue. Sorry, it is not converting the code, so I have to use the hexadecimal value. I mean, I have to give the color code. Guys, so now I will paste the color code. Guys, now it is color change into blue, dark blue. Guys, and after this, for make this more attractive, I will use image. So let me use this image. Guys, so for making the more attractive and good look for this call recorder app, I will use a image. So I didn't design any kind of graphic for this call recorder. I have just downloaded the image from Google. So now I am going to copy this image.
So let me open this image, and so this is the image we are going to put in our call recorder app. So copy this and paste in your drawable folder here in this. Now its name is record.png. Okay guys, and now we will use this image into by using the image view. We will set this image by using the image view. So for setting this image here, we will use image view. So let's drag or code from let's drag and drag or code image view. Height I will take it match fair, and with this I will take wrap content, and ID we don't need any kind of ID for this image view because we are not going to perform any kind of option. So but we can give, no, we don't need. And source I am going to do this for drawable record. So we have to manage this, guys. Now it is in middle, it is looking fine, I think. Okay guys, and one more thing we need here, we can create a button here for starting the call recorder app, or we can create menu here for the starting the call recorder app and stopping the call recorder app. So in my demonstration video I take here button for starting the call recorder, but I think we can take a toggle button for just on and off the call recorder button in just a quick action. So what we need to do here, so we can take a button for starting the call recorder here, and we can also take a toggle button. So I will, let's do that. Okay guys, so now I will use the toggle button. So by this toggle button we can just close our call recorder app and open call recorder app in just seconds. So let's drag our code toggle button from here and make this into wrap content. Like this. Now it will cover the all, guys, and now I will change the color of this toggle button. So for that, so which color code is better for this button? I am just copying the color code and paste here. We will use Android background attribute. Hey guys, now our toggle button has designed here for the stopping and stopping and open the call recorder. Okay guys, I forget to use Hindi language, I am sorry for that, and now I will use the Hindi continue. Okay guys, मैंने यहाँ पे बटन ले लिया है, मैंने टॉगल बटन ले लिया है फॉर द कॉल रिकॉर्डर को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए. Guys, now I think our design coding have completed, but हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टास्क आ रहा है ये कुछ थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा है, हम इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन दिस. guys, so let's forget about this for changing this taskbar. It is here, so I'm not going to waste some time in this. So let's move on to our main coding. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ गाइस. अब हम कोडिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इस अपने कॉल रिकॉर्डर को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे ये काम करेगा, वो सारी कोडिंग अब हम करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास में.
कोडिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि ये अगर मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास। Okay guys, so now our designing part has been done and now we will move on the coding. Okay guys, हमारा डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी कोडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फॉर मेकिंग द कॉल रिकॉर्डिंग ऐप वी विल यूज द सर्विस कॉन्सेप्ट इन एंड्रॉयड। तो ओके गाइज, सो कॉल रिकॉर्डर बनाने के लिए गाइज हमें सर्विस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। Guys, service concept, why we use service concept? Because the service concept in Android used for the for long running background task, for working with the long running background task like downloading the background file and for the making the music player app for working with the background task। गाइज उसके लिए गाइज हमें सर्विस कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा जिससे कि हमारा कॉल रिकॉर्डर बैकग्राउंड में वर्क कर सके। ओके गाइज, सो नाउ वी विल परफॉर्म द सर्विस ऑपरेशन इन अवर ऐप। सो गाइज उसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी होगी। सो फॉर परफॉर्मिंग द सर्विस ऑपरेशन वी विल यूज एंड वी विल क्रिएट ए क्लास। सो फॉर क्रिएटिंग द क्लास जस्ट राइट क्लिक ऑन योर ऐप पैकेज फोल्डर एंड राइट क्लिक ऑन एंड क्लिक ऑन न्यू एंड क्लिक ऑन न्यू जावा क्लास। तो गाइज सो क्लास का नाम अब हमें देना होगा। क्लास का नाम मैं ऐसे दूंगा रिकॉर्डिंग सर्विस। रिकॉर्डिंग सर्विस गाइज एंड क्लिक ऑन ओके। गाइज नाउ हमारी क्लास, नाउ अवर क्लास हैज क्रिएटेड एंड आफ्टर दिस what we are going to do and we have to extend this class by using this service। guys उसके बाद हमें इस क्लास को inherit करना होगा by using this service। so extend this class by using this service। guys ये हमें कुछ मेथड प्रोवाइड कराएगी। guys now it will ask for importing the some methods। जिसके बाद ये कुछ मेथड्स इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। सो हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से, ये रेड बल्ब जो विजुअल हो रहा है वहाँ से। गाइस इम्प्लीमेंट मेथड्स, ठीक है। जो वी नीड जस्ट ओनली वन फॉर नाउ, वी विल जस्ट इंपोर्ट ओनली वन दिस ऑन बाइंड एंड आफ्टर वी नीड मैनी मेथड्स, सो वी विल टेक केयर अबाउट दैट लेटर। Okay guys and now we are going to start। गाइस सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे एक मीडिया रिकॉर्डर चाहिए होगा। सो इनिशियलाइज, सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने होंगे गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स media recorder to share and write media and make the object of this sorry guys because there is some cold in my neck, I'm sorry for that। and we need a one boolean variable, private boolean, and I will give the name for, I will name this record started। record started, okay guys। and we need here file for saving our recording। so create file here, create variable private file, object of file, okay guys। and we need also a path for saving our recordings। we can define it later and we can define it right now। हम इसे बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, या अभी डिफाइन, मैं इसे अभी डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि मैंने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग के डेमोन्स्ट्रेशन में बताया है। स्ट्रिंग पाथ डिफॉल्ट में से अलार्म फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और एनी अदर फोल्डर आई कैन चूज, बट लेट मी गिव द अलार्म फोल्डर।
because a long folder is only default in this default given in our memory card or device. तो गाइस मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं और मीडिया रिकॉर्डर भी डिक्लेयर कर दिया है और फाइल भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एंड आफ्टर दिस we need here one more method, we call it on create method. So just to override this method, yeah, we can override this later. So first we will override on start command method. So in this method we will do our whole work and whole things. So in sorry for that, I'm sorry, there is some cold in my. Okay guys, so इस method में guys let me first initialize this method on a start command. guys मैंने import कर लिया है, मैंने इसे initialize कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कोडिंग इसमें। guys, so first of all I will create the file. By using first of all I am going to declare the folder for saving the recording. So declare the folder, मैं सबसे पहले फोल्डर फाइल को सेव करने के लिए एक फोल्डर डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। So let us declare now file is equal environment get external okay guys, so and in this we are going to give our directory path environment dot directory alarms. okay guys, मैंने ये इसे डिक्लेयर कर दिया है, but it is showing some error here. What is the problem in this file environment? आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ एंटर करना है, पब्लिक होना चाहिए यहाँ पे। guys, now it is showing still error. Let me import this again. Environment dot get external. It is here. What is the problem? Unreachable statement. There is some problem in this. Sorry guys, I made a mistake here. I didn't put here backslash. Still it did not resolve. String paths, everything is fine. So guys, it was happening because I didn't make this now uncomment. Okay guys, now it is fine guys, and after initializing and creating our file and setting the default folder for recording for saving the file, and now we are going to move on recording our file. So for that we need here date for saving our recording in our date format. So let's initialize our date now guys. इसके बाद हमें डेट को अपनी डेट को रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे डेट के लिए इनिशियलाइज करना होगा, और उसके लिए हमें गाइस यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू डेट इनिशियलाइज डेट एंड मेक डेट ऑफ डेट is equal new date. Sorry.
and and we use charge cat sequence and make the object of cat sequence like into STF is equal date format dot format, and in this we are going to pass our format like month of and date D and year and hours millisecond and S. This is our format of recording for saving the recording, and we also need a date object, so it is our date and call the method dot get time. It is internal method, we don't need to create this. Okay guys, now our date format have created and initialized, and now we are going to record our recording file. गाइस इसके बाद हम फाइल को रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया रिकॉर्डर का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. सो क्रिएट नाउ. So by using the media recorder object, we are going to create like that. So record is equal new media recorder. Guys, अब हमने इसे initialize कर लिया है, and now we are going to set our audio source. So record by using the object of media recorder record dot set audio source. गाइज ऑडियो सोर्स में गाइज हम माइक को सेट नहीं करने वाले हैं, हम ऑडियो सोर्स में वॉइस कॉल सेट करेंगे. उसके लिए हमें मीडिया रिकॉर्डर चाहिए होगा. मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑडियो सोर्स. गाइज मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. मैं आई कैन डू फास्ट इट, but then you will not understand what I am going to do and what I am saying. So media recorder dot audio source, and then we need to call voice call. Okay guys, now our set audio source completed, and after this we are going to set our output format. इसके बाद हम format को set करने वाले हैं. So record by using the object media recorder record dot set output format. Set output format which is very here, and in this we are going to pass media recorder dot output format. It is media recorder dot output format. It is here output format dot 3GP. 3GP, there is many format we can record, and I am going to select the 3GPP. Okay guys, and now we are going to set our output file. So record, हम output file को set करने वाले हैं. record dot set output file. This we are going to pass file dot get absolute path. गाइज एंड यहाँ पे पाथ देने वाले हैं इसके लिए, तो इसके लिए हम प्लस एंड बैक स्लैश, और हम अपना फॉर्मेट भी ऐड करने वाले हैं. इसके लिए हमें वो भी प्लस करना पड़ेगा. अपना डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट SDF, और साथ में हमें तो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट भी ऐड करना है. इसके लिए प्लस डॉट रिकॉर्ड डॉट 3GP. Guys, and now we are going to set audio encoder. So set audio encoder. So record dot set audio encoder, and in this we are set our encoder mode. So media recorder audio encoder dot AMR NB.
Okay guys, and after this now what we are going to do, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं गाइज, इसके बाद हम जो जैसे कि हमें रिकॉर्डिंग, जैसे हमें कॉल कब रिकॉर्ड करनी है और कब नहीं करनी है, उसके लिए गाइज हमें एक ब्रॉडकास्ट को मुझे मतलब एक लिसनर मुझे यूज़ करना होगा। उसके लिए मुझे टेलीफोनी मैनेजर यूज़ करना होगा। सो टेलीफोन मैनेजर and make the object of this telephony manager is equal to and a typecast into telephony manager and call the get application context and call the get system service, and after this we need to again call the get application context. Okay guys, and after this now we will call the dot telephony service. It is into is capital letter. Okay guys, and by using the object of this telephony manager, we will call the listen, and then we will call new phone state listener. So manager dot listen कि गाइज इसके बाद हम कुछ मेथड, तो गाइज इसका मतलब ये है गाइज जब हम कॉल को इसका मतलब ये है गाइज, जैसे कि मैंने ये इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, ये मतलब जब हम फ़ोन कॉल करते हैं या मतलब जब रिसीव करते हैं तो उसके लिए गाइज ये मेथड्स और ये फंक्शन मैंने यूज़ किया है, मेथड मैंने यूज़ किया है टेलीफोनी मैनेजर। इसके अंदर में कुछ और मेथड्स ओवरराइड करने होंगे, जिसके लिए जैसे कि ऑन कॉल स्टेट चेंज एंड on call hold and on call cut, many methods I am going to show you, मतलब call, let me initialize first। so पहला मेथड मैं ओवरराइड करने जा रहा हूँ on call state changed। it is not coming here, sorry, I put a semicolon here। that is not coming, I am going to type here on call state change। yeah, the mouse method I have overridden here, so this is for indicate string incoming calls। ठीक है जो, सो इस मेथड में आज हम डिफाइन करेंगे कि हमें कब कॉल रिकॉर्ड करनी है और कब नहीं करनी है। सो इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हेन वी नीड टू रिकॉर्ड आवर कॉल एंड व्हेन वी नीड टू पुश आवर मीडिया रिकॉर्डर फॉर द सेविंग एंड रिकॉर्डिंग द कॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we are going to do in this, it is some problem here, it should not be semicolon here, I have to remove this bracket। yeah, and so now we are going to, so I'm going to if statement, so if telephony manager, sorry, telephony manager dot call state idle,
अगर गाइस ये कॉल स्टेट आइडल मोड में है तो हमें क्या करना है, आइडल या फिर स्टेट मोड में है, एंड रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू नल। गाइस अगर कोई मतलब कॉल ये आइडल मतलब अगर कॉल स्टेट आइडल में है तो गाइस ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। मतलब I mean let me do this first, then I will describe here. I hope guys you are understanding what I am doing here. If you will little bit knowledge about the programming or Java language or Android, गाइज सो अगर फ़ोन हमारा कॉल स्टेट आइडल मोड में है गाइज तो हम और रिकॉर्डिंग या फिर जहाँ पर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है गाइज, इफ अगर ये कॉल स्टेट आइडल में है इज इक्वल टू स्टेट कॉल आइडल, मतलब इसके इज इक्वल टू स्टेट और या फिर एंड इट इज एंड ऑपरेटर, और रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू नल। रिकॉर्डिंग नल होगी गाइज अगर यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग स्टॉप होनी है यहाँ पे, और रिकॉर्डर जो हमारा प्राइवेट मीडिया रिकॉर्डर है उसे स्टॉप करना है यहाँ पे, और उसे रीसेट भी करना है यहाँ पे, और उसे यहाँ पे रिलीज भी करना है। उसके बाद रिकॉर्ड स्टार्टेड जो कि हमारा बूलियन वेरिएबल है उसे फॉल्स करना है, रिकॉर्डिंग करता जाएगा। I hope guys you are understanding what I am doing here. Guys, telephony manager, it is internal broadcast, we can call it, and we can say it is broadcast receiver. So when our call state idle is equal to state and recording is equal to null, then we will stop our recorder and reset our recorder and release our recorder, and recording we will make false. Understand? मेरा मतलब गाइस जब हमारा कॉल स्टेट आइडल मोड में होगा तब गाइस हमें रिकॉर्डर को स्टॉप करना है, रीसेट करना है, रिलीज करना है और रिकॉर्डिंग को फॉल्स करना है। जब कोई भी कॉल नहीं होगी तब, इसका पूरे का मतलब ये होगा। ओके, एंड वी नीड टू कॉल वन मोर थिंग हियर। और गाइस हमें यहाँ पे एक टोस्ट करना है। that we cannot I am not going to do any kind of toast here, and we need to call one more method, stop self. Guys, else if, and in our else if statement, sorry, and else if statement में guys हमें क्या करना है, टेलीफोन मैनेजर डॉट कॉल स्टेट ऑफ इज इक्वल टू स्टेट। गाइस ऑफ का मतलब क्या हुआ आपको पता है ना? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑफ? ऑफ का मीन हुआ जब कॉल कनेक्ट हो गई है और हमें अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है गाइस, so when our telephony manager is on the call state to off hook, then what we need to do, let me show here. Then we will to record अपने जो रिकॉर्डर उसे प्रिपेयर करना है फर्स्ट। सो रिकॉर्डर डॉट प्रिपेयर, एंड फिर से स्टार्ट करना है रिकॉर्डर डॉट
स्टार्ट, रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद रिकॉर्ड स्टार्टेड इज इक्वल टू ट्रू। सॉरी गाइस, इट इज बूलियन वेरिएबल स्टार्टेड इज इक्वल टू ट्रू गाइस। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें इसे ट्राई कैच में डालना पड़ेगा, बिकॉज इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन occur, then it will show the message. So put this into try catch. We can यहाँ पे भी we can put from here, otherwise we can type ourselves. Okay, so now I have put into try catch, and guys, and after this what we are going to do, यहाँ पे हम कॉमा लगा, और एक मेथड और रह गया जिसे हमें इनिशियलाइज करना है। फोन स्टेट लिसनो डॉट लिसन कॉल स्टेट। and yeah, this last method, it is for the on state when there is no call coming and there is no call available for incoming and outgoing. Then it is I have insight well there is no need for this method, there is no need for this, but I have decided that. And then final we are going to return स्टार्ट स्टिकी। कैच मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टार्ट स्टिकी किया है, बिकॉज इसका मतलब गाइस ये स्टार्ट स्टिकी का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कॉल रिकॉर्डर किसी की इफ देयर इन लेट मी यूज हिंदी फर्स्ट देन आई विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। गाइस स्टार्ट स्टिकी मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है क्योंकि गाइस अगर किसी फ़ोन की रैम कम होती है और फ़ोन का एंड्रॉयड सिस्टम उसे इस ऐप को फोर्सली क्लोज कर देता है रैम कम होने की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो गाइस स्टार्ट स्टिकी में वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन की रैम कम है और कॉल रिकॉर्डर को फोर्सली एंड्रॉयड सिस्टम ने स्टॉप कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ लेट मी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस आई हैव रिटर्न द स्टार्ट स्टिकी बिकॉज when if sometimes our phone system stop the our service for and stop the our recorder app due to some memory low problems, so then start sticky will restart our service for and it will restart our call recorder for recording the calls. Okay guys, so I have written here start sticky. It is showing here error any and I don't know where it is error. It is here. What is the problem? I think semicolon is somewhere semicolon is missing. Where it is public void okay guys, I think यहाँ पे here we need to comment this. It is already I have commented this and now there is some extra braces here. I am going to find this. It is extra braces here, remove this. Okay guys, now everything is fine. Okay guys, and after this what we need to do, and after this we need to start our service, we need to start our call recorder app. So for this now we are going to move on in our main activity.java class. So here we can start and off this call recorder. So for this now we are going to move into main activity.java class here. Okay guys,
Guys, I can make it more complicated for you. Like I can show the notification when our call is recorded and when our call is saved. So that's gonna be so much heavy, and so you maybe not understand. So this is for beginners developers. So it is really concept for teaching the how we can record the call in our Android. Guys, so it is a simple and easy call recorder app for beginners. So I can make it more complicated and I can make it more better, and I will make it more better in my upcoming videos. गैज मैं ऐसे ही अच्छा या ऐसे ही बढ़िया भी इसमें कुछ अपडेट करने हैं, जैसे कि इसे और भी अच्छा मैं बना सकता हूँ, जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूँ कॉल जब जब आए, या मतलब कॉल रिकॉर्ड हो तब, और कॉल सेव हो जाए तब उसके बाद नोटिफिकेशन आए गैज, मैं वो भी इसमें ऐड कर सकता हूँ गैज, लेकिन देन इट विल बिकम सो हैवीली एंड देन यू मे बी नॉट अंडरस्टैंड, and then it will take more concept and more coding. So I have just it is light coding and light call recording app for the recording the call. So I don't think it is I don't want to make it more complicated for the beginners developers and for beginners Android app developers. So it is simple and easy, because I am also learning the Android app development. So I think it is it may be not good enough, but it is already, but it is at least something, at least it is working and it is recording the call. So in my upcoming video I can make it more better and more flexible, but I think it is enough for teaching the Android call recording app. Okay guys, so now we are going to start our call recorder and test it. So I have already tested in my demonstration video, so now I am going to finish this coding. Sorry, and recording is happening or not? Guys, now recording is happening. Recording is continue running. Okay guys, and now we are going to start this call recorder and off this call recorder. I mean now how we will start and how we will off this call recorder. So for this we will start our service, and so for this I am going to into main activity.java class, and first of all we need to here initialize our toggle button for starting and stopping the call recorder. So for that initialize our toggle button here, and make the object of start and it is guys, and now initialize this into our on create method. So by using the object of toggle button, typecast into toggle button, and find it by find view id method. गाइस टॉगल बटन की आईडी मुझे फाइंड करनी है, मैंने आईडी से क्या दिया है चेक करना होगी मुझे यहाँ पे आके. गाइस इसकी आईडी है गाइस टॉगल बटन 2. कॉपी दिस, अदरवाइज वी कैन फाइंड इट देयर. guys and okay guys, so now we will use our toggle button for starting the call recorder and off the call recorder. Okay guys, so for that we have to create a method, otherwise we can do from here, but I'm going to create a method because that's it is so easy and you can understand very well. Guys, so let's create a method for call for toggle button. So public void and give the method name like toggle button. Yeah, we can write it recorder. Sorry, I will use toggle button. And pass in this view argument, otherwise our recorder will have the exception. Okay guys, so and now we will copy this and paste into our
on create method. It is already I have created here. I forget to show that, and I have to remove, and I will. So now and right on click and paste that method into here. Okay guys, now on click method had created. Okay guys, and now come back into main activity.java class, and here we have already created that, and now we need to code here something. So like first we need to here boolean variable. So boolean, and make the object of boolean like checked. I have already taught you how to use boolean, how to use toggle button in my previous video and in my past videos. You can watch it, and checked, and you here typecast into toggle button, and here we need to put dual bracket because and view and put into bracket dot is checked. अगर हमारा टॉगल बटन ऑन होगा या चेक होगा तो हमें क्या करना है, हमें अपने then if it is checked, अगर हमारा टॉगल बटन ऑन है तो हमें कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है. उसके लिए गाइस हमें सर्विस को स्टार्ट करना होगा. फॉर स्टार्टिंग द सर्विस जस्ट यूज द इंटेंट. मैंने सर्विस के कॉन्सेप्ट में बताया है गाइस कि सर्विस क्या है और सर्विस को हम कैसे यूज करते हैं. तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं सर्विस अबाउट सर्विस, और जान सकते हैं कि ये सर्विस क्या है और ये मतलब कैसे काम करती है, कैसे क्या है इसका. I have already taught you how to work with service and how we can start and how we can close the service. So if you want to learn about the more concept service, then go to in my previous videos, in my past videos. Okay guys, so intent, make the object of intent is equal to new intent, and pass here our service name, service class name like this, recording service. Our class name is recording service, and dot class. Sorry. Okay guys, and now we will start and finally call the start service. Start service. It is and pass your intent object. What is the problem here? What is the problem? Start service. Why it is showing the error? Declaration not allowed here. I forget to create the bracket here. Now it is okay. Okay guys, and start the service, and we will use here toast for showing this our recorder has started. So for that show a toast message here. Get application context and pass your message that call recorder started. Call recording started. Okay guys, now toast dot length sort. Okay guys, sorry for that, there is some problem in my I am having with the cuff. Okay guys, else, and now we will use our else statement.
अगर हमारा टॉगल बटन ऑफ है तो हमें क्या करना है, सर्विस को ऑफ करना है, रिकॉर्डर को ऑफ करना है अपने कॉल. इफ आवर टॉगल बटन इज स्विच ऑफ देन वी विल स्टॉप द आवर कॉल रिकॉर्डर एंड स्टॉप द सर्विस. So in our else statement, just copy this statement from here, paste here, and change this into stop. Okay, and here we need to toast also. Here we need also a toast here. So copy this toast message from here and paste here, and rename this call recording stopped. Okay guys, now our call recording coding has been done, and now we can test it on our real device and we can test it on our anywhere. Okay guys, if you got any problem in this recorder in this recording app, so you can comment on my videos, and you can ask anything about this if it is not working or it is not running, because I am not going to test it again. I have already tested and show you in my demonstration video. So I will I will run in this my emulator, but we cannot call in our emulator, so you can test it on your real device, and but I am going to run in my emulator for showing you there is no exception or crashing this app. Just start your emulator. My emulator is already start, and now I am going to run this. Sorry, my emulator is not started, so I am going to start this. ओके गाइज, मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है और मैं इसे रन करने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये इंस्टॉल होती है, रन होती है या नहीं. ओके गाइज, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस रन आइकॉन. आई एम सॉरी गाइज, बिकॉज मैंने काफ़ी स्लो आपको समझाया है एंड स्लो काफ़ी टीच किया है, इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है. आई एम सॉरी फॉर दैट. इफ़ आई रन फास्ट, इफ़ आई टीच यू फास्ट, देन maybe you could not understand what I am doing and what I did here. So I teach you how so slow. And now I'm going to run this app. Now it is going to install. Okay guys, now you are watching that, you are looking that our call recorder has installed in our emulator, and now we are going to test it. Okay guys, so now I'm going to test it. So I cannot test in this emulator because we cannot call here, but I am going to show this button how it is working and not. So at this time it is on the off state mode. So our call recorder is already off, and if we want to start our call recorder, then we will click in this button, then it will show the toast, and then it will start the call recorder. So let me click on this button. Now call recording started. Now it is showing the call recording started, and our call recorder is started for recording the calls. And if I want to close this, then I will just click on this button. Okay guys, now call recording stopped. Okay guys, so this is simple button I have take here for the starting and stopping the call recorder. Guys, I can make it more better call recording app, like I can add the many other activities for showing the recording in this, and for settings like here from menus, and many things I can do in this call recorder for making the better call recorder, but I am not going to do this here because I am going to do this in production and for the Play Store apps. So this is for the teaching the concept about the Android call recording app. Okay guys, I hope it will helpful for you for making the call recording app, for making your own call recording app. So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel for getting the more videos, and guys प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम नोटपैड एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉयड में. उसके बाद गाइस जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, वॉइस रिकॉग्निशन ऐप, नोटपैड ऐप, और भी मैंने म्यूजिक प्लेयर ऐप, मैं आपको सब बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें.
गाइस एंड शेयर भी करें गाइस। जितने जल्दी सब्सक्राइबर्स और लाइक से मेरे चैनल को वीडियोस को मिलते हैं गाइस, वो मुझे मतलब इनकरेज करते हैं फॉर मेकिंग दी बेटर वर्क एंड teaching the more concept about the Android apps development. Thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel for getting the more videos. Thank you. Have a nice day. Wait. Hello. Bye. Guys. Wait guys. I'm sorry guys. I forgot something here. I forget to code in our manifest file. I'm sorry for that. So please come into your manifest file, because I forget to give the permissions and broadcast receiver permissions etc. So please do not close this video and listen the next statement. So go to your manifest file here. Guys, here we need to give some permission for our call recorder. And one more thing guys, I am going to tell you, if your phone runs on Android Marshmallow or on the upper on the another and the new version of Android Marshmallow and not and the any another new version, then you have to give the permission in your permission of your Android call recorder in by the settings. So guys, you manage the runtime. I didn't give it a runtime permission for recording the call, so it may be force cross into Android Marshmallow. Okay guys, in marshmallow version on and in other versions which are new. So please give the permission. I will in my upcoming video I will teach you how to give the permission in our Android Marshmallow and in Android Nut and other new versions. So please do not please give the permission. If you don't know how to give the permission, I will teach you how to do that. So please guys so now we need to code some in our Android manifest file. So let's do that now. So first of all we need to give the permission here. So first permission I am going to give here use permission and the Android process outgoing calls. So here Android process it is not coming here. First we need to type here permission. Process, where it is process. Process outgoing calls. And the second permission we need to give here, I am going to paste here because it will save us time. You can guys, now I am going to copy and paste here. Guys, these four permissions we need to give for our app for recording the call, and we need to give here some intent broadcast receivers here. So for that, come into intent filter main here, and I am going to paste here. Otherwise I can code here. So I will code so you can understand what I did here. First of all guys, I am going to give this service. I am going to define our service in activity. So for that, come into here and service and recording service path and close this now. Guys, and now we need to give here some intent filters. So action, there is some problem.
main activity launcher. I think we should give here action Android name and the Android intent dot action new outgoing call. I am going to copy here, paste here. Guys, now it is paste here, and two more we need to paste here. One more. Guys, now our call recorder has completed, and now we can test it and run it and use it. Guys, thank you guys for watching my video and watching my tutorial. Please like and subscribe my channel for getting more videos. Thank you.